हेलो माय स्मार्ट केमिस्ट्री लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ICSE क्लास 6 एंड 7 की बेसिक्स। तो चलिए लेट्स बिगिन। Okay, now what is matter? Matter is anything that has mass and occupies space. So basically we can remember two words कि कोई भी चीज़ जो occupy करती है space उससे कहते हैं matter, और जिसके पास होता है mass. Now what is this mass? बहुत सारे students बोलते हैं कि mass weighty है. नहीं, there is a difference. Mass और weight में difference है. A shortcut thing I can say you that mass में gravitational force नहीं होती है और weight में gravitational force apply होती है. Okay, you remember this forever. जब भी physics में term आएगा mass, you remember कि mass यानी it's a inner content या वज़न जिस पे gravitational force act नहीं होती है, और weight जिस पे gravitational force act होती है. Okay, now matter is basically of two types. Matter is living and non-living. Okay, और एक भी टू टाइप्स हो सकता है. मैटर बना हुआ है, मैन मेड या नेचुरल. ओके, सो लिविंग में आप चार चीज़ देख सकते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस and microorganisms. Or you can remember famous microorganisms these days, that's coronavirus. Okay, non-living organisms could be anything like your metals, non-metals, many more things जो भी है. अभी matter बना हुआ किससे है? Matter बना हुआ है atom से. Now, what is an atom? Atom is the smallest unit of matter. And in step 1, we talked about an atom, its elements, compounds, and many more things. Moving on to the next topic, that is characteristics of matter. Characteristics of matter. अब ये matter है क्या? तभी भी हम matter बोलते हैं तो everyone brings a picture of three things: solid, liquid, gas. हाँ, ये solid, liquid, gas बने हुए हैं atom से, लेकिन क्यों वो solid है, क्यों वो liquid है, क्यों वो gas है? उन लोग की characteristics क्या है? पहली चीज़, पहला मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि फर्स्ट वन, दैट इज एटम्स पोसेस काइनेटिक एनर्जी. अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या है? हमने फिज़िक्स में दो एनर्जीज पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. बस आप शॉर्टकट इतना याद रख लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो आपको मूवमेंट के लिए मदद में आती है. लाइक पोटेंशियल एनर्जी आप प्रोसेस करते हैं मूवमेंट लाने के लिए, लेकिन करंट प्रैक्टिकल मूवमेंट के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी ज़रूरत होती है. तो हम वी गॉट एन आइडिया दैट एटम्स या मॉलिक्यूल्स मूव हो सकते हैं क्योंकि उन लोग के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है. अब ये मूवमेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट आई कैन से. वन इज़ ब्राउनियन मूवमेंट एंड वन इज़ डिफ्यूजन. Now what is this Brownian movement? Brownian movement is the atoms, they'll move in a zigzag order. Just a random order में move होते हैं, zigzag order basically I can say. Diffusion, a best example I can say you that if I spray a perfume in this room and the other person जो दूसरे रूम में है उसको smell आ जाती है, वो fragrance आ जाती है perfume की. How come this possible? डिफ्यूजन का मतलब ये है कि द मिक्सचर ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स विद द अदर काइंड ऑफ एटम्स एंड gases can diffuse it very fastly. Let's move to the second characteristic, that is two atoms possess strong force. Strong force होती है दो एटम्स के बीच में, और हम इसे कह सकते हैं intermolecular force. Intermolecular force.
और एक भी चीज़ याद रखिए, इंटर अलग है, इंट्रा अलग है. इंटर यानी आउटसाइड टू एटम्स, इंट्रा मतलब विद इन. इंटरमोलिकुलर फोर्स को हम ऑलरेडी कह सकते हैं, वी कैन ऑल्सो से कोहेसिव फोर्स. थर्ड कैरेक्टर, देयर इज अ स्पेस बिटवीन एटम्स. जब भी सॉलिड, लिक्विड या गैस में आप देखेंगे कि दो एटम्स के बीच में स्पेस होती है. ओके, मूविंग ऑन टू द सेकेंड टॉपिक, that is states of matter. We learned many times there are three states of matters: solid, liquid and gas. You can check out the image. Solids, there might be two solids: hard solid and soft solids. Next, third heading is the effect of heat. Effect of heat on the state of conversion of matter. अब ये है क्या, आपने बहुत बार देखा. आई कैन जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल दैट वाटर होता क्या है. वाटर बेसिकली एक लिक्विड मैटर होता है, और जब हम उसको फ्रिज में रखते हैं इट टर्न्स आउट टू बी एन आइस. जब हम उसे स्टोव पे रखते हैं तो इट टर्न्स आउट टू बी अ वेपर. तो ये जो मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, इसे कहते हैं इंटर कन्वर्शन ऑफ मैटर्स, एंड दिस कैन बी हैपन ड्यू टू हीट. If we start up with solid, जब हम उसे मेल्ट करते हैं तो it turns out to be a liquid. So this I can say solid, when it is converting to liquid, you can call this as melting or fusion. Okay, there's also one word that is melting point. देखिए, जब मेल्टिंग कहते हैं तो सॉलिड लिक्विड में टर्न हो जा, जैसे कि आपकी सॉलिड आइसक्रीम लिक्विड बन जा रही है 2 सेकंड में. अब जब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तभी भी पॉइंट आता है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट. पॉइंट बेसिकली टेम्परेचर को डिनोट करता है. जैसे टेम्परेचर पे जो सॉलिड लिक्विड बन जा रहा है उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट. नेक्स्ट, अगर मैं ये लिक्विड को हीट करूँगी ज़्यादा तो इट टर्न्स आउट टू बी vapor or gas. So this one is called as vaporization. You can check out in the images that how it's turning out to be a vapor, or I can also say it as evaporation. और इसमें होता है boiling point. Next, vapor to liquid. It can also be a reverse reaction. You can call this as condensation. A best example I can give you a condensation, that if your mom pack hot food tiffin in your tiffin box, तभी भी आप जब tiffin box का lid open करते हैं तो you can see water droplets. So vapor turns out to be liquid. Next we move to solid to gas or solid to vapor. This can called as sublimation. You can see this clearly in the image. Okay. Next, solid to liquid भी होता है reverse reaction, उसे हम कहते हैं solidification. सेकेंड चीज़ हम मैटर में पढ़ेंगे कि मैटर एक्सपैंड होता है, वेदर इफ़ इट इज़ इन सॉलिड स्टेट और लिक्विड और गैस. तभी भी जब भी आप उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तब वो एक्सपैंड होता है. थर्ड थिंग, दैट मैटर अंडरगोज इनटू केमिकल चेंज. सो बेसिकली हमने इतना बड़ा चैप्टर शॉर्टकट 5 और 10 मिनट्स में वाइंड अप कर दिया है बाय हाईलाइटिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. We talk about the characteristics of the matter. Characteristics, 4 characteristics याद रखिए आप. It contains kinetic energy, intermolecular force or cohesive force, intermolecular space, and it has physical properties too. Second, states of matter: solid, liquid, gas. Third one, interconversions of matter, which is very important in the upcoming classes too. Third, expansion of matter. And next, matter undergoes into chemical change. Moving on to the next topic, that is elements, compounds, mixtures. So we talk in our step 1 video that atom combines to form
Molecules. Now molecules could be of two types. There are pure substances and next one could be impure substances. We have seen pure substances that are elements and compounds. Now what are elements? I've shown you there are of the same atom, same kind of an atom, whereas compounds, it could be different atom. Okay, next, impure substances are of two types, homogeneous and heterogeneous. So I can give you a hint. जब भी आप ऐसे छोटे वर्ड्स का मीनिंग समझ जाते हैं, सो इट कुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक्स, या ना तो आपकी नॉलेज ईजिली स्मूथली मूव ऑन हो सकते हैं आप जब आप ऐसे छोटी छोटी चीज़ सीख सकते हैं. किसी भी बड़ी चीज़ सीखने के लिए आप जब छोटे छोटे स्टेप्स जाते हैं तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. ठीक है, होमो का मतलब है होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट. यानी जब आप किसी भी दो कंपाउंड्स को मिलाते हैं तब आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई ऐड सॉल्ट इनटू द वाटर, क्या आप सॉल्ट के पार्टिकल्स आफ्टर स्टरिंग, क्या आप सॉल्ट के पार्टिकल्स देख सकते हैं सेपरेटली? नो, यू कांट सेपरेट सॉल्ट एंड यू कांट सेपरेट वाटर. मतलब आप देख नहीं सकते, तो वो आप मिक्सचर दिखता है आपको होमोजेनस मिक्सचर. हेट्रोजेनस, इफ़ आई मिक्स let's say sand, and if I mix salt, if I mix another powder, easily I can separate them. If I mix some colored sand, so I can separate the color molecules, red color alag, brown color alag, red color alag. Yani they are different, they can be easily recognizable as different molecules. So this is also a shortcut thing for your elements, compounds and mixtures. What are pure elements, what are impure elements or impure substances.